Hello student, I am Dr. S. Dhare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. Deoxyribose nucleic acid. So this is the nucleic acid and which is biochemical in the cell. Now let us study about this thing. Contents, definition of DNA, discovery of DNA, composition and structure of DNA, Chargaff rule, forms of DNA and functions of DNA. So this is the content of our presentation. So first of all, let us see the definition of DNA. DNA is a complex self-replicating master biomolecule that controls, regulates cellular functions and inheritance traits of the organism, consisting of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. So this is the simplified definition of DNA molecule, which is a master molecule, and it describes the functions also, because it controls and regulates cellular activities, cellular functions. So this is the simple definition of DNA. So discovery of DNA. The discovery of DNA is a contributory work of Friedrich Mischer, Erwin Chargaff, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, Francis Crick and James Watson. So we have to understand that the discovery of DNA is not a work of any single individual, but it is a work of many scientists. So it is a contributory work. Rosalind Franklin was X-ray crystallographer who laid the foundation of DNA study. So here we have to appreciate the role of this scientist called Rosalind Franklin. So he studied X-ray crystallography of DNA molecule. On the basis of this study made by Rosalind Franklin, Francis Crick and James Watson built the helical DNA. So therefore this women, Rosalind Franklin, laid the foundation of DNA study. Now here is the photograph of Watson and Crick, who designed this double helical model of DNA molecule. And this is Rosalind Franklin. She was a X-ray crystallographer and she carried out basic studies of DNA. On that basis, these two scientists carried out further investigation and their further research. Composition of DNA molecule and structure of DNA. So here we have to see how this DNA molecule is made up of. DNA chemically consists of nitrogen bases, pentose sugar and phosphates. Okay, so these are the three basic components that make the DNA molecule. Now nitrogen bases are of two types. One is purine and another is pyrimidine. So these are the two main nitrogen bases. Purines are of two types, that is adenine and guanine. Pyrimidines are of three types, that is thymine, cytosine and uracil. But uracil does not participate in the composition of DNA molecule. It is used in RNA
molecule. So this is the basic composition of DNA molecule. Okay. Now here is the photograph of Phoebus Levin, who investigated the composition of DNA molecule. So this is the chart of different components of DNA molecule. So biochemical composition of DNA molecule. This DNA molecule consists of purines, pyrimidines, pentose sugar, and inorganic phosphates. So these are the important things involved in the composition of DNA. Purines are of two types, that is adenine and guanine. Pyrimidines are thymine and cytosine. Then there is a important terminology. Here is the important terminology, that is nucleotide. So the nucleotide consists of one nitrogen base, one pentose sugar, and one inorganic phosphate, whereas nucleoside consists of one nitrogen base and one pentose sugar. There is no inorganic phosphate in nucleoside. So these are the two important terminologies that you have to understand, because these are the important in composition of DNA. Then we have to see how this DNA molecule is. Here is the model called double helix DNA model. So here you can see this is double helical structure of DNA molecule. Now here this is the arrow indicating the polarity of this DNA molecule. तो यहाँ पर ये जो DNA molecule है जो helically wound है around this hypothetical axis, ये hypothetical axis है, और उस एक्सिस के आजू बाजू में ये हेलिकली वाउंड DNA molecule है. Now here you can see this DNA molecule has this backbone consisting of this sugar and phosphate bonds indicated as S and P, whereas here you can see this nitrogen bases, this C bonded with G, isn't it? And these are the three hydrogen bonds. Similarly, we can see here thymine bonded with adenine with double bond. So in this way, this entire molecule of DNA consists of number of nucleotides, isn't it? Purine and pine bondings are there, isn't it? So therefore DNA molecule is a polynucleotide. These are the polarities 5 prime, 3 prime, isn't it? This is the polarity of the DNA molecule 3 prime to 5 prime. This is the ends indicating the hydroxyl end, and 5 prime indicates the phosphate end. So this thing is reversed here, isn't it? Opposite polarity, because these two strands are parallel but their polarity is opposite. So these DNA strands are anti-parallel, isn't it? We cannot say that DNA molecule is a parallel stranded molecule, but the strands are having opposite polarity, therefore it is called anti-parallel strands. Okay. Now here you can see the dimensions
3.4 angstrom unit. So this is the distance between two nucleotides. ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स है, isn't it? नाइट्रोजन बेसेस है, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला नाइट्रोजन बेस, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये है 3.4 angstrom units, whereas this 34 angstrom unit indicate a complete turn, the distance between a complete turn of one turn, that is one turn is consisting of this much distance, 34 angstrom, इतना ये डिस्टेंस होता है ये पूरा टर्न का, है ना। यहाँ से ये जो हेलिकल टर्न ऐसा है, ये पूरा के पूरा एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ओके, एज आई टोल्ड यू, इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल. The strands are anti-parallel, isn't it, because of their opposite polarities. Then there are major and minor grooves. So here you can see these are the notches, isn't it? Major and minor. Here is minor groove and this is minor groove. Major groove and minor groove. So here you can see these are the polynucleotides arranged one above the another, making this entire strand. Pentose sugar is deoxyribose. So here the pentose sugar is there indicated as P. This S sugar, yes. And this sugar is a deoxyribose sugar, isn't it? So there are ribose and deoxyribose sugars. So here in DNA, the sugar is deoxyribose. There is a phosphate group in the form of phosphoric acid. So this phosphate group is indicated as P. So here you can see this P. So P, that is phosphate group, bonds with this pentose sugar. So there is a bonding indicator as S and P, isn't it? So this is the backbone of DNA molecule. Phosphate on 5' is on 5th carbon and on 3' is on 3rd carbon of pentose sugar. So this is the position, isn't it, of this phosphate and sugar bonds, isn't it? So here you can see there is a bonding between phosphate and sugar units. Sequence of nitrogen bases is unique for inheritance. So this sequence of nitrogen bases, isn't it? This sequence of nitrogen bases is very, very important. Any alteration or change in these sequences ultimately affects to the phenotype of the organism, or it may affect to physiological functions of the gene. So therefore these sequences are important. अगर ये सीक्वेंस नीचे पर हो जाता है तो उसका परिणाम ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे हो सकता है, फिजियोलॉजी पे हो सकता है, साइकोलॉजी पे हो सकता है, बहुत सारे उसके परिणाम हो सकते हैं. तो उसके लिए ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस के, वो सीक्वेंस इनहेरिटेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. देन देयर आर 10 pairs of nucleotides per turn, isn't it? So you can see this distance, this one turn of 34 angstrom, and this one turn contains 10 nucleotides per turn. 10 न्यूक्लियोटाइड्स एक टर्न के अंदर होते हैं. तो ये जो है ये पूरा डिस्क्रिप्शन और ये फिगर डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में है. नाउ हियर आई हैव shown the important thing. So this is a small portion of the DNA molecule, isn't it? So here you can see this is one strand and this is another strand. Okay. Here you can see clearly the sugar molecule, that is pentose sugar. It is attached with this
nitrogen base. Similarly, on this strand there is a pentose sugar which is attached to the nitrogen base. So this nucleotide is there, and on this strand this nucleotide is there, and these two nucleotides are joined together through these hydrogen bonds, isn't it? So here I have shown S indicates pentose sugar, P indicates inorganic phosphate, A indicates adenine, G guanine, T thymine, C cytosine. So these are the nitrogen bases, ATGC, isn't it? Adenine, guanine, thymine, cytosine are the nitrogen bases, and these nitrogen bases are arranged in the center of this strand. Okay. Another thing is that this pentose sugar, it is a pentose sugar, and here is also a pentose sugar. So both pentose sugars are having their orientation in opposite direction. इसका ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे तो ये पेंटोस शुगर का ओरिएंटेशन और ये स्ट्रैंड के ऊपर जो पेंटोस शुगर है उसका ओरिएंटेशन ये अपोजिट है, isn't it? ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से है और इसका ओरिएंटेशन ये ऊपर की तरफ है, तो ये अपोजिट ओरिएंटेशन है ये शुगर मॉलिक्यूल का, isn't it? तो उसके लिए क्या होता है, इसका पोलैरिटी अपोजिट होता है, and therefore the strands, these two strands are एंटी पैरेलल. तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि ये स्ट्रैंड एंटी पैरेलल क्यों है, इसलिए जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम जो एंड्स होते हैं, तो वो जो डायरेक्शन है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, ये अपोजिट इसीलिए होती है कि ये यहाँ पे ये पोलैरिटी अलग अलग है इसकी, है ना. सो इससे ये पेंटोस शुगर से हमें पता चलता है. अभी यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, the bonding between this pentose sugar and phosphate is shown here. So here you can see this phosphate, this phosphate. So this is the phosphate and this is the pentose sugar. अभी यहाँ पे जो pentose sugar है, this pentose sugar is having this particular bond with this phosphate group. Okay, isn't it? This pentose sugar is bonded with this phosphate, and this bond is called phosphodiester bond, isn't it? This bond is called phosphodiester bond. So here you can see this pentose sugar and this phosphate is bonded with each other through this phosphodiester bond. So you can see this phosphodiester backbone connecting to the pentose sugar and phosphate, and these central bonds are hydrogen bonds. These are the bonds between these two nucleotides, that is two nitrogen bases. So these are the hydrogen bonds and these are the phosphodiester bonds. So here I have shown that small portion of this particular phosphodiester bond. तो ये बॉन्ड का इतना ये पोर्शन मैंने यहाँ पे बताया आपको. तो ये इधर आप देखेंगे ये 5 प्राइम एंड है और उसकी अपोजिट नीचे 3 प्राइम एंड होता है. जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 5 प्राइम एंड जो है इसलिए कहा जाता है कि ये पेंटोस शुगर है, उसके 5 नंबर के कार्बन के ऊपर ये फॉस्फेट अटैच्ड है, इसलिए इट इज़ ए 5 प्राइम एंड. और ये इधर जो है तो ये 3 प्राइम एंड इसलिए है कि ये तीसरे कार्बन के ऊपर इधर फॉस्फेट अटैच्ड है, तो ये अरेंजमेंट है, इसीलिए इट इज़ ए 5 प्राइम एंड एंड अपोजिट टू इट इज़ ए 3 प्राइम एंड, isn't it? So this polarity is decided by this arrangement. तो इस प्रकार से ये DNA का मॉलिक्यूल है उसका ये कंपोजिशन है. So here I have shown this 5 prime and 3 prime ends and 3 prime to 5 prime ends, isn't it? तो ये इस प्रकार से है ये. So therefore the DNA molecule shows the opposite polarity. Okay, so here is hydrogen bond और उसके बाद में यहाँ पर ये फॉस्फेट बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. सो दिस आर द 2 इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स दैट मेक्स अप द डीएनए मॉलिक्यूल. तो ये बात को हमें यहाँ समझ लेना चाहिए. ओके, नाउ हियर इज द शुगर, it is a pentose sugar. So DNA contains pentose sugar
where oxygen is lost at second carbon position, isn't it? So here this is the ribose sugar, isn't it? This is the ribose sugar. So here you have to see that this is a pentose sugar containing 5 carbons. So this is first carbon, second, third, fourth, and this is the fifth carbon. Okay. So this is the 5 carbon sugar. At this position there is OH group. Okay. So this is ribose sugar. But in DNA the sugar is deoxyribose. So here you can see this one oxygen is lost at this position, isn't it? So the oxygen on the carbon number 2 is absent here. Therefore, this sugar is called 2-deoxyribose sugar, and therefore the name deoxyribonucleic acid, isn't it? So this DNA stands for deoxyribose sugar, isn't it? So that is the name of the DNA. So this is the important thing we have to consider here. तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डीएनए में जो पेंटोस शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज किस्म की है, यानी कि दूसरे कार्बन के ऊपर का जो ऑक्सीजन है वो कम है यहाँ पर, जहाँ के राइबोज शुगर में वो ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो ये आरएनए में शुगर होती है और ये डीएनए में पाई जाती है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर हियर अबाउट द पेंटोस शुगर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर मैंने फिर से यहाँ पर ये डीएनए का मॉलिक्यूल बताया है। हियर यू कैन सी नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर शोन हियर बिटवीन दिस टू नाइट्रोजन बेसेस। ये स्ट्रैंड के ऊपर का ये नाइट्रोजन बेस है, ये स्ट्रैंड के ऊपर का ये नाइट्रोजन बेस है और ये अडेन है। हियर यू कैन सी दिस इज adenine and this is thymine. So there is double bond, isn't it? And this bond is hydrogen bond. So this is guanine and this is cytosine. So guanine और cytosine के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, isn't it? उसी प्रकार से इधर ये पेंटोस शुगर है and this pentose sugar is connected to this phosphate group. Okay. तो ये जो है 5 प्राइम एंड है और ये निचला जो एंड है ये 3 प्राइम एंड है। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर इन दिस फिगर आल्सो। नाइट्रोजन बेसिस पेयरिंग इज स्पेसिफिक। इससे ये पता चलता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, इजंट इट? देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, इजंट इट? ATGC. So ATGC is the basic what can I say nitrogen bases making the DNA molecule. तो ये DNA molecule के अंदर की ये बहुत important nitrogen bases है ATGC. In other words you can call it a basic alphabet of biology. ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके डीएनए के अंदर एटीजीसी पाया जाता है। इट इज़ ए यूनिवर्सल काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, isn't it? Whether it is animal or plant or bacteria or viruses. So there are ATGC. Okay. तो ये यूनिवर्सल बेसिस है। So therefore we can call it basic alphabet biology. These nitrogen bases pair with each other in complementary fashion, isn't it? So ये स्पेशलिटी है, isn't it? नाइट्रोजन बेसिस का जो पेयरिंग होता है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ए ऑलवेज बॉन्ड्स विथ टी और वाइस वर्सा, सी ऑलवेज बॉन्ड्स विथ जी और वाइस वर्सा। ये स्पेसिफिक है, isn't it? साइटोसिन का बॉन्डिंग ग्वानिन के साथ ही होगा या फिर ग्वानिन का बॉन्डिंग साइटोसिन के साथ होगा। उसी प्रकार से एडेनाइन का बॉन्डिंग थाइमिन के साथ होगा या फिर थाइमिन का बॉन्डिंग एडेनाइन के साथ होगा। ये स्पेसिफिक है। अभी ऐसा नहीं होगा कि एडेनाइन इज बॉन्डिंग विथ ग्वानाइन और साइटोसिन इज बॉन्डिंग विथ थाइमिन, ऐसा उल्टा नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक बॉन्डिंग बिटवीन दिस
purines and pyrimidines, isn't it? So therefore, adenine always bonds with thymine, that is A always bonds with T and vice versa, G always bonds with C, vice versa. So this is the specific bonding. इसके अंदर कोई डिफेक्ट और या एरर नहीं आता है. अगर एरर आता है तो उसको करेक्ट किया जाता है. अगर वो एरर ज़्यादा है तो उसका परिणाम ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में हो सकता है, मॉर्फोलॉजी पे भी हो सकता है, उसके बहुत सारे डिफेक्ट्स और एरर्स तैयार हो सकते हैं. इसीलिए ये बॉन्डिंग जो है, दिस बॉन्डिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री. एक दूसरे को जो है तो ये पूरक होती है, इजंट इट? So that is the most important thing about the DNA molecule. Then चैरगैफ रूल है. चैरगैफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रूल बनाया, isn't it? Erwin Chargaff in 1949 studied that the quantity of purines and pyrimidines are equal. So this is the observation of this scientist Erwin Chargaff. तो उन्होंने ये 1949 में बताया कि प्यूरिन और पायरिमिडाइन का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम होती है, isn't it? ये उन्होंने बताया. सो दिस इज़ द साइंटिस्ट चैरगैफ, जिनका नाम है एरविन चैरगैफ, isn't it? सो दिस इज़ द साइंटिस्ट. उन्होंने ये रूल बताया हमको. द अमाउंट ऑफ adenine इज़ इक्वल टू थायमीन. सो A एंड T इनका भी जो अमाउंट होता है वो सिमिलर होता है, isn't it? उसके बाद में अमाउंट ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू साइटोसिन. सो G इज ऑल्सो इक्वल टू C. जिस प्रकार से A इज इक्वल टू T, G इज ऑल्सो इक्वल टू C. बट A प्लस T मे नॉट बी इक्वल टू G प्लस C, isn't it? तो ये एडेनाइन और थायमिन की क्वांटिटी ग्वाइनिन और साइटोसिन से इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, वो होती नहीं है, isn't it? Generally it doesn't happen that in any DNA molecule or in any species A plus T may not be equal to G plus C. ये भी है. Therefore ratio of A plus T G plus C is constant for a species. तो कोई भी स्पेसिस के अंदर इसका जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है. इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट. द रेशो ऑफ A plus T and G plus C is constant in any species. ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है चारगाफ के रूल का. तो इस प्रकार से ये डीएनए का मॉलिक्यूल है. और डीएनए के मॉलिक्यूल की जो रचना होती है उसके अंदर भी कोई थोड़ा फ़र्क होता है. सो देयरफॉर these differences makes different forms of DNA, isn't it? There are different conformational types of DNA, that is A, B, C, D, E and Z. तो ये जो अलग अलग रूप होते हैं डीएनए के, isn't it? ये 6 प्रकार के रूप हमें बायोलॉजी के अंदर मिलते हैं. A, B, C, D, E and Z. So these are the different forms of DNA, and these different forms of the DNA is due to external or internal environments, isn't it? सेल के अंदर का जो बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कौन सा फॉर्म डीएनए का वो सेल के अंदर मिलेगा. ओनली A, B and Z फॉर्म्स आर कॉमन एंड डोमिनेंट. ये 3 किस्म के जो फॉर्म्स है ये कॉमन है और डोमिनेंट है. This different structural variation is due to species and cellular biochemistry variation. जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग स्पेसीज के अंदर उनकी बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर बायोकेमिस्ट्री, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये डीएनए की जो रचना होती है उसका जो कन्फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग होता है. थोड़ा थोड़ा माइनर फ़र्क होता है. जैसे कि A, B और Z के बीच में थोड़ा थोड़ा माइनर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्पेसीज वेरिएशन एंड सेलुलर बायोकेमिस्ट्री. तो इस वजह से ये अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं. दिस फॉर्म्स हैज़ देयर स्ट्रक्चरल वेरिएशन. अभी ये वेरिएशन जो होता है तो उसकी वजह से
कुछ उसके कैरेक्टर्स भी अलग अलग पाए जाते हैं. सो आई हैव मेंशन दिस डिफरेंट फॉर्म्स, that is A form DNA, B form DNA and Z form DNA, and these are the traits or characters of different properties of the DNA molecule. तो अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्जांपल हेलिक्स डायरेक्शन. सो दिस हेलिक्स डायरेक्शन ऑफ ए फॉर्म ऑफ डीएनए और ए टाइप ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड, बी का राइट हैंडेड है और जेड का लेफ्ट हैंडेड है. बेस पेयर पर हेलिक्स टर्न ए फॉर्म में 10.9 है, बी फॉर्म में 10 है, जेड फॉर्म में 12 है. उसी प्रकार से मॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा फर्क होता है. ये अलग अलग किस्म के डीएनए के फॉर्म में. मॉर्फोलॉजी में ए फॉर्म शॉर्ट एंड वाइड होता है, बी फॉर्म लॉन्गर एंड थिनर होता है, जेड फॉर्म इलोंगेटेड एंड थिन होता है. मेजर ग्रूव, अभी ए फॉर्म में मेजर ग्रूव नैरो एंड डीप होते हैं, isn't it? In B form it is wide and medium deep. In Z form it is flattened out on the helix surface. तो ये अलग किस्म का थोड़ा सा उसका माइनर डिफरेंस है मेजर ग्रूव में. ये तीनों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है. नाउ माइनर ग्रूव जो होते हैं तो ए फॉर्म का माइनर ग्रूव जो होता है वेरी वाइड एंड शैलो होता है. देन बी फॉर्म शो नैरो एंड मीडियम डीप माइनर ग्रूव, whereas Z form show very narrow and very deep minor groove, isn't it? Then base inclination from helix axis in degrees, A form show 13 degree, B form show 2 degree and Z form show 8.8 degree. Occurrence, so A form is found in dehydrated condition, whereas B form DNA form occur in or common in cells that are hydrated, whereas Z form show it is found in guanine and cytosine rich conditions. जहाँ जो सेल के अंदर guanine और cytosine बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये Z फॉर्म का डीएनए पाया जाता है. राइज जो होता है, राइज और बीपी दैट इज़ बेस पर यहाँ पर ये जो नैनोमीटर्स में बताया है बेस में का जो डिस्टेंस है, ना, ये जो डिस्टेंस है जिसे राइज कहते हैं, ये 2.55 इन ए फॉर्म में है. उसके बाद में बी फॉर्म के अंदर ये 2.37 है, जेड फॉर्म में वो 1.84 है. तो इस प्रकार से ये राइज उसका अलग अलग है, isn't it? पर बेस का जो डिस्टेंस होता है बेस पेयर में वो नैनोमीटर्स में, ये भी उसके अंदर डिफरेंस अलग अलग पाया जाता है. तो इस प्रकार से यू कैन सी देयर इज़ ए कंपैरिजन ऑफ दीज 3 डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड इन रिस्पेक्ट टू देयर दिस प्रॉपर्टीज. सो हियर इज़ द फिगर ऑफ ए फॉर्म डीएनए. इस प्रकार से दिखेगा वो. उसका ट्रांसफ़र सेक्शन में इस प्रकार से दिखेगा उसका ट्रांसफ़र. अगर फिगर देखा जाए ऐसा ट्रांसफ़र सेक्शन में, ये बी फॉर्म का फिगर है. ये इस प्रकार से उसका कंपोजिशन दिखेगा. और ये जेड फॉर्म है, इसका वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. तो ये आप स्ट्रक्चरल वेरिएशन जो है ये यहाँ ये दोनों के बीच में उतना नहीं है स्ट्रक्चरल वेरिएशन, लेकिन जेड फॉर्म में वो ज़्यादा नज़र आता है, isn't it? तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्म है डीएनए के. देन फंक्शंस ऑफ डीएनए, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. डीएनए इज़ द मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल. ये डीएनए जो होता है सेल के अंदर ये कंट्रोलर होता है, इट इज़ ए बॉस ऑफ द सेल. तो ऑल द फंक्शंस आर टेकिंग प्लेस under the surveillance or guidance of the DNA molecule. It controls all the physiological, morphological, hereditary aspects of the cell. जितना भी morphological यानी कि phenotype है वो सब. उसके बाद में hereditary variation के aspect भी DNA कंट्रोल करता है. Physiological functions भी DNA कंट्रोल करता है. Hormones, enzymes and other biochemical reactions are also governed by
DNA molecule. DNA is the fundamental unit of heredity, forming a gene which help in genetic transmission of traits through generations. So this is the prime function and very fundamental function of DNA molecule. हेरिडिटी, जिसे हम अनुवंशिकता कहलाते हैं, ये अनुवंशिकता जो है तो डीएनए मॉलिक्यूल से होती है. डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर ही जीन होते हैं. सो देयरफॉर this transmission of traits or characters from one generation to another generation occurs through DNA molecule. Therefore ये function जो होता है ये बहुत important है. It regulates protein synthesis, isn't it? So all the protein synthesis activities are under the control of DNA molecule. ये monitor करते रहता है, isn't it? तो जितना भी प्रोटीन सेल के अंदर होता है उसको बनाना, कितना क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय डीएनए मॉलिक्यूल. इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन थ्रू म्यूटेशन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि इवोल्यूशन जिसे हम उत्क्रांति कहते हैं वो भी डीएनए के मार्फत ही होती है. तो जितना भी उत्क्रांतीय के बारे में हम बात करेंगे, इजंट इट, तो डीएनए का उसमें रोल बहुत ज़्यादा है, इजंट इट. और डीएनए के अंदर म्यूटेशन होते हैं. म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, इजंट इट. तो अल्टरेशन भी होता है डीएनए के अंदर, सब अल्टरेशन होते रहता है, चेंज होते रहता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं हमारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में. एंड दिस म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. उत्क्रांति में उसका रोल होता है. सो देयरफॉर डीएनए प्लेज वाइटल रोल इन इवोल्यूशन आल्सो. तो इस प्रकार से ये डीएनए के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीएनए. डीएनए इज ए स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इजंट इट. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है तो उसको पहले वो स्टोर करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज इन जेनेटिक कोड्स, इजंट इट. फिर उसको डी कोड किया जाता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. लेकिन ये जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द लिविंग थिंग्स, इट इज स्टोर्ड इन डीएनए. इट रेप्लिकेट्स द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म इट्स डॉटर मॉलिक्यूल. सो डीएनए रेप्लिकेट भी होता है. डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन, सो इट हैज़ एटोकैटालिटिक रेप्लिकेटिव मोड, इजंट इट. तो ये भी करता है क्योंकि स्पेसीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसके लिए डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ता है. अगर लाइफ का कंटिन्यूशन होना चाहिए तो वो डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए. सो देयरफॉर इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इस प्रकार से ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, इजंट इट. जैसे हमने देखा कि डीएनए ट्रांसमिट और carry on the information from one generation to another generation or next generation. तो ये भी महत्वपूर्ण कार्य है इसका, अनुवंशिकता जिसे हम कहेंगे, isn't it? तो जनरेशन टू जनरेशन ये चलते रहता है. It undergoes mutation under the influence of internal or external factors. So म्यूटेशन, जैसा मैंने बताया कि म्यूटेशन जो है, अल्टरेशन और चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में ऑकर, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है सेल के अंदर के जो भी बायोकेमिकल एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से भी म्यूटेशन डीएनए के अंदर हो सकता है. और एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है कि बाहर के जो भी फैक्टर्स है, जैसे कि एक्सरेज है, गामा रेज है, पोल्यूशन है, या सन रेज है, isn't it? सो एक्सटर्नल फैक्टर, वो फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं डीएनए सीक्वेंस को, और वो डीएनए सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है. सो देयरफॉर डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें अल्टरेशन लाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. म्यूटेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज द सोर्स ऑफ इवोल्यूशन, that is updation and upgradation of the species. So this is very important thing, that mutability, that is mutation, isn't it? Mutation DNA के अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर म्यूटेशन होता है,
isn't it? And that is called mutability of the DNA molecule. So DNA molecule has the ability that is called mutability, isn't it? तो म्यूटेशन डीएनए के अंदर होता है और दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इवोल्यूशन, और जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, इज़न्ट इट? एडवांसमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर या चेंजेस हो जाते हैं, एडाप्टेशन के लिए ऑर्गेनिज्म तैयार होता है ड्यू टू म्यूटेशन, इज़न्ट इट? अपडेशन भी होता है, अपग्रेडेशन होता है स्पीसीज़ का, नए तरीके के एडाप्टेशंस वो ऑर्गेनिज्म कर सकता है, इज़न्ट इट? एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में कोई बदल होता है तो उसके लिए डीएनए के अंदर भी बदल होना ज़रूरी है, और ये म्यूटेशन अगर होता है तो वो ऑर्गेनिज्म नए एडाप्टेशन ले सकता है, कर सकता है, खुद के अंदर बदलाव ला सकता है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म एंड दैट स्पीसीज कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्गर जनरेशंस। तो इस प्रकार से इसका फंक्शन है। तो ये जो है सब इंफॉर्मेशन आप अच्छी तरह से इसको देख लेना है, और यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, see repeatedly and prepare your own notes. Thank you.